Hello students, welcome to the brand new episode of Brahmastra series. Today in this episode we are going to discuss about projectile. Students, over the period of time I have realized that there are variety of problems that we can create on projectile, right? But there are certain concepts which repeatedly used which are repeatedly used in the questions, and the relevance of quadratic equation and the parabola curve in attempting the problem of projectile, we must have a look into that. So let me discuss a basic concept today. Suppose there is a projectile, right? And theta is the angle of projection, and at a particular point this is the trajectory, and the trajectory, as we all know, comes out to be a parabola. You select any particular point on the parabola, and if we join it with the origin and the end point, this position vector is making an angle alpha, and this position vector is making an angle beta. Now we are here to prove that this tan theta is equals to tan alpha plus tan beta, right? Okay. Now please understand, if we look at the projectile in the y direction, we have an initial velocity uy, and there is a horizontal velocity we can write as ux, correct? Now I am interested to see that if the projectile travels a y distance, if the displacement in the y direction is y, what in terms of time, what equation do we get? So I am applying the second equation, right? So the second equation says that the displacement in the y direction is y, then initial velocity in the y direction uy t, and minus, because the acceleration is downward, g by 2 t square, right? This is our equation. Let us just rearrange this equation and find out what will happen. So I'm taking 2y on this side. This is 2uy t minus gt square. Okay guys, let me take the complete quadratic equation on the one side. This is going to be gt square minus 2uyt and plus 2y. Okay guys, so if I take this g in the denominator, this is t square minus 2uy over g into time, right, plus 2y over g. Now all of you know that the quadratic equation has got two solutions, right? So it's a quadratic equation in the time. Suppose the two roots of this equation comes out to be t1 and t2, right? So what can we talk about these two roots is that the sum of these two roots, t1 plus t2, is going to be equal to the minus b by a, right? And that is 2uy over g, right? And the product of these two roots is going to be equal to c by a, that is 2y over g. Now you will find variety of questions where this information you'll be looking at repeatedly. Okay, so now I have calculated that this particular y is achieved by the projectile, right? There are two times, t1 and t2, right? The first time is, if I draw a dotted line, this is also y, right? So the particle takes t1 time to reach this particular point q, and the particle takes t2 time to reach at this point p. So the particle is at the same vertical displacement at two different intervals of time, right? And the relation between those times as t1, t2 is as per this quadratic equation. Okay, now we are supposed to prove that the angle of projection tan theta is equals to tan alpha and tan beta. Fine. So let's go to the next slide. Suppose this is our parabola. Fine. And this is our height h, or we can say y as per the equation. The horizontal velocity is ux, and the vertical velocity, initial vertical velocity, is uy. Okay. Suppose the particle has taken time t1 for reaching from A to O to P, and let's call this point as O dash. Okay, so the time taken to reach from O to P is t1.
So this distance is going to be ux t1, right? And then this distance is going to be covered in the t2 seconds. Okay, so this distance I can write as ux into t2. Okay, now look at the angles. This angle I suppose was beta, this angle is beta, and this angle is basically alpha. So what can we say about tan alpha and tan beta? Let's write them. Tan alpha becomes perpendicular, that is y, over base, that is uxt1, right? And tan beta is y over uxt2. Okay guys, got it? Now let's add these two quantities. Tan alpha plus tan beta comes out as y over, I can take the y over ux as common. So what we are getting is 1 over t1 plus 1 over t2. Good to go. Okay, let's rearrange this y over ux, and I'm taking the LCM. This is t1 plus t2 divided over t1 and t2. Okay, nice. This is tan alpha plus tan beta. Guys, I hope you have understood to this point. Now you are getting t1 plus t2 and t1 and t2. And I hope in the previous slide you have understood how we have got these values of t1 plus t2 and t1 into t2. Okay, so the value of t1 plus t2, I'm going to place these value. So it's y over ux, putting the value of t1 plus t2. t1 plus t2 is 2 uy over g, and then the value of t1 into t2 is 2y by g. Okay, this is 2y by g, right? So we can directly see the g cancels out, the 2 will cancel out, y will also cancel out, and this will turn into uy over ux. And uy over ux, I think everybody knows this. If uy is the initial velocity in the y direction and ux is the initial velocity in the x direction, then net velocity is this, and this is the angle of projection. So tan theta is uy over ux. Got it? So you have confirmed the result which we were supposed to prove, that is the tan of angle of projection is coming out equal to the sum of the tan of alpha and beta, where alpha and beta are basically the angle of the position vectors of that particular point from the two corners of the parabola. Okay, so how we have achieved the result is more important by analyzing this quadratic equation and taking use of the basic information of the quadratic. Okay, so this is one of the quadratic equation and its proof. Next, I am going to put more light on the equation. Suppose there is a parabola, right, and it goes to a height h, right? The initial velocity is u, okay, and the angle of projection is theta. Now all of you know that the equation of trajectory is x tan theta into 1 minus x over r, right? And if I rearrange this equation, let us see what are we going to get. So this is ry and this is x tan theta, and multiplying it becomes x square tan theta. Okay guys, I am going to rearrange this equation. Let's take the x square on this side, x square tan theta, and minus, I think r will also come here, so it's going to be r tan theta, right? And then there is an ry is equal to 0. Perfect. We are analyzing another quadratic equation which we have got through the trajectory equation, right? So x square tan theta, okay, let's divide the equation with the tan theta and convert the quadratic in a more sophisticated manner.
right? So x r plus ry over tan theta. So this is the simple quadratic format of the equation of trajectory. Everybody knows that there are going to be two solutions, right? There will be some value x1 and x2. Let's call those roots as x1 and x2. And let's talk and let's discuss what are those roots basically. Now, again, the projectile crosses or cover the vertical height h twice. That is, this distance from the origin is called x1. If I call this x1, then this distance is called x2. So these are the roots of this quadratic equation, x1 and x2. And what is the relation between x1 and x2? Again, the x1 and x2, we can see the sum of the roots is going to be equal to minus b over a, that is r equal to the range. Again, an important piece of information. And the product of x1 and x2 is going to be equal to ry over tan theta, right? But I will go on and I will try to solve these roots individually, okay? So let's solve the quadratic equation to get down to the roots, because there is something important which I want to tell you before solving a question. So the quadratic equation is basically x square minus xr plus ry tan theta. This is ry tan theta equal to 0. Let's solve this. So the solution is going to be minus b, that is r, plus minus under root b square, that is square of minus r, minus 4, a is 1, and then there is a c, ry over tan theta. Let's good to go. Divided by 2a. Fine. These are the roots. We also know that there is a relation of maximum height with the range, that is r tan theta by 4. This relation you can easily get through equation of trajectory. H is equal to r tan theta by 4. Okay, so I am going to use this h to make the solutions x1 and x2. I want to write the x1 and x2 value in terms of height h, because most of the time the questions are formed in a manner where they give the y in terms of maximum height. So it will take us lesser time to get to the solution. So x is equals to, basically rewriting it, I'm taking 2 on both of the sides, r by 2, then it is plus minus. The quantity inside it becomes r square and minus r y 4 tan theta. Okay, what if I take r square as common? What if I take r square as common? So if you will take r square as common, guys, you will get r outside. This is r by 2, and in the under root we are getting as 1 minus, there is a 4, then there is a y, then there is a r tan theta in the denominator. So I'm again writing this r by minus. Let's take the 4 in the denominator. What are we getting is r tan theta by 4. And I hope r tan theta by 4, you know, is the maximum height of the projectile. So this solution, this value of x, we are able to get in terms of maximum height. This x, this is the solution of the quadratic equation. We are able to form this value of x in terms of maximum height, and that was our primary target. So r by 2 plus minus r by 2 under root 1 minus y is equals to h, maximum height. So these are the two roots of the quadratic equation, right? Those two roots are r by 2 plus minus r by 2 under root 1 minus, then there is a quantity h divided by the maximum height. Now understand the beauty. Suppose this is your projectile and this is the height in which we are interested, right? So this height is first achieved
at position coordinate x1 and then it is achieved at position coordinate x2. Now I want you to understand what is this value. This particular value or interval is called delta x or x2 minus x1. Let's call this x2 minus x1. Fine. This point P and this point Q. It's the difference of these two roots. What happens if we take the difference of these two roots, x1 and x2? So that if we take the difference, this comes out to be the twice of this quantity, right? This is the only quantity that differs in both the roots. So the twice of this quantity becomes r into 1 minus h over h. Now it's a very important result if you can remember this before the exam or for the exam, that generally the problems that are made in the projectile, and I'm talking about the problems which becomes quite calculative and complicated. The information which they generally give is about this particular height the projectile reaches twice and thrice, and sometimes they give information of this height in terms of maximum height. So if they give the question in such format, we should be able to easily comprehend this delta x or this change, and this comes out to be a very sophisticated result, right? R is the range, h is the height that is given to you in the question. Now let me just write in place of h, I'm writing y. Why? To make it more relevant for the students. Okay, so this is a delta x, and this is how we have analyzed the two quadratic equations. I am going to take you a little backward. First, we analyze the quadratic equation of time with the displacement y, and we got two results, t1 and t2, and we analyze them, right? Similarly, we also analyze the quadratic equation that we are getting from the equation of trajectory, and what result we came up with. The result was that the particle or the projectile, it covers the same height h twice, and the distance between those two heights is delta x, and the delta x comes out to be this. Okay, now we shall proceed to the question. Okay, this is the question. A stone is thrown in such a manner that it would just hit a bird at the top of a tree and afterwards reach a maximum height double that of the tree. If at the moment of throwing the stone, the bird flies away horizontally with a constant velocity and the stone hits the bird after some time, if the ratio of the horizontal velocity of the stone to that of the bird is root n plus 1 is to n, basically this is root n plus 1 divided over n, we have to calculate the value of n. So let me decode the question for you. Okay, so basically this is our projectile, and we have got a tree. Suppose this is our tree and there is the bird. Okay, so the bird is basically traveling or flying horizontally. Okay, let's call the bird is at a point P and we are throwing the projectile from a point O. The projectile must have a velocity, horizontal velocity, and some vertical velocity uy. Okay, now this is our maximum height h, capital H, and the bird travels from P to Q. Okay, this is the distance, and the stone is going to collide with the bird, right? When it is launched from point O, and they both will collide. This is Q is the collision point. The Q is the collision point. Here they both are going to collide. The velocity of the bird, let's call the velocity of the bird is VB, and the horizontal velocity of the stone is UX. So in the question, if you look at the question, they are asking the ratio, if the ratio of the horizontal velocity of stone to that of the bird. So the question asks the ratio of the horizontal velocity of the stone to that of the bird. This comes out to be root n plus 1 over n, right? And we are supposed to calculate the value of n. Okay, let's approach this question. Suppose the bird takes t time to reach from point P to Q. Okay, so I can directly say, because there is no acceleration in the horizontal direction, I can directly write that VB, velocity of bird, into time t is going to be equal to this certain distance. Let's call this distance as x, and let's call this, by symmetry of the parabola, we can also
We can also say that this distance is going to be again x. Okay, and let's call the range for this projectile is r. If that is the range, then what is going to be this distance? This will automatically become r by 2 minus x, and by the symmetricity of parabola we can say this distance is also r by 2 minus x. So vb, the velocity of the bird into time, will come out as 2x. Okay, similarly same amount of time the stone takes and it travels from O to Q. So the horizontal distance it covers is ux in the same time interval t, and it comes out to be, this is r by 2 minus x, right? And you add 2x inside it. So you are getting r by 2 plus x. So these are the two equations which we are getting. We are interested in ux upon vb. Let's divide it. Ux upon vb. So ux upon vb becomes r by 2 plus x divided by 2x. Now see, couple of minutes back I told you a result where we have analyzed that what is this delta x, the difference between the roots of the quadratic equation, right? That we got from the trajectory equation. Now in this solution, if we can calculate the value of x, we can easily calculate this answer. Okay, and what do you think is the value of x or 2x? Basically it is this height is approached, or this height is reached by the stone twice for two values of x, right? Let me choose white marker. So this value 2x we are actually interested in, right? And this 2x is basically delta x, that is basically the difference in the roots, x2 minus x1, if you remember in the previous equation, right? This was the result, delta x, the difference between the two roots, that is r into 1 minus y by h. So 2x is equal to delta x is equal to x2 minus x1. So this delta x, or this value of 2x, is coming out as r into 1 minus h or y, you can say, and divided by maximum height, right? Now important part is, let's understand the question. There is some more information we required about h and capital H. Okay, so the maximum height double that of the tree. So the maximum height is double the height of the tree, and h is basically the height of the tree. So 2x value will come out as r under root 1 minus, this is capital H over 2 divided over h. So you will cancel out. So the value of 2x comes out as r into root 2. So the value of x will come out as r over 2 root 2. So this is the value of x. Let us place the value of x in that equation, ux upon vb. So ux upon vb comes out as, it is r by 2, and I hope it is x. So x is r by 2 root 2. Okay. Then in the denominator, then there is again x. So r over 2 root 2. Fine. R can be cancelled out. So it is half plus half root 2 divided over 1 over root 2. Understood? So let's take the half common. This root 2 will go upside, right? So it will be the root 2 in the denominator. There is a fraction, so it will go up. So it's going to be root 2 and half plus half root 2. It's going to be 1 over root 2, 1 plus 1 over root 2. So what we are basically getting is root 2 plus 1, and then root 2 multiplied by root 2 is 2. So this is basically our ux over velocity of bird. This is the answer, and the value of n is going to be 2. Okay, so this is the method, and this is the importance of basically analyzing that quadratic equation. Okay, now
we have used this result of a quadratic equation, but there is another format also. There is another way of analyzing the same question. You can analyze the same question with the concept of tan theta is equals to tan alpha plus tan beta. By this concept also you can analyze this question. Let me just tell you, I'm doing again the same question. This is H, and this is the point where actually the collision is happening, right? This is the point Q and this is the point P. Fine. So let me touch this and touch this point. Let's call this angle as alpha. Let's call this angle as beta. Okay. And we know the maximum height is capital H. Now what we are actually interested in is this particular distance. Okay. The bird flight from point P to point Q, right? This is point P and this is point Q. Okay. And this is basically the projection velocity, and the projection angle is theta. So we know the projection angle tan theta is going to be equal to tan alpha plus tan beta. Fine. So what is going to be the value of alpha? How much time the projectile is going to take to travel to point Q? This base we can directly write as ux into t1, and this beta we can directly write as ux into t2. Okay, so tan theta can be written as tan alpha plus tan beta. And what is the value of tan alpha you can place? The value of tan alpha is you can place is h over ux t1 plus h over ux into t2. This is the value of tan theta, and we know tan theta is the projection angle. Now this is the maximum height h. Okay, this is true. Let's save this. This is a part 1. Now we know that we can make any number of triangles in this trajectory, right? What about if I make a triangle with the topmost point? What happens if I make a triangle with the topmost point? This topmost point is called H, and this base is basically R by 2. Okay, and for this particular red triangle, please focus here. This red triangle, let's call this angle as alpha dash, and let's call this angle as bisymmetry alpha dash. So we can say that tan alpha dash plus tan alpha dash is going to equal to angle of projection tan theta. And what is going to be the value of tan alpha dash? What is going to be the value of tan alpha dash? Tan alpha dash is maximum height h over r by 2. So it's basically 2 tan alpha dash is equal to tan theta, and the value of tan alpha dash is maximum height divided by r by 2, and that makes, we can directly write 4 over here. Okay, we have got a 4 here, and the value of tan theta we have already got as 4h by r. One thing we know is that the small height h is h over 2. Now in place of tan theta we can directly substitute this value of tan theta, and h can be eliminated. If I place this value, 4h over r is equals to h over ux 1 over t1 plus 1 over t2. Okay, so what is the value we are getting? 4h over r is equals to h is capital H over 2 ux into 1 over t1 plus 1 over t2. So we'll cancel out this. This comes out as 8 over r is equals to 1 over ux into 1 over t1 plus 1 over t2. Now by the same result, by the quadratic equation in time, we can directly place the value of t1 plus t2 and t1 and t2. So there are two methods. You must compare that by using which concept and which relation you can reduce the time in the examination. Okay, let us approach the next question.
A point P at a height h on a projectile's path has an elevation angle alpha. Please understand this. From the point of a projection, if the maximum height attained by the projectile is h, find the ratio of tan A to tan theta. So let me make a projectile. What the question is asking is, this is the projectile, fine, and there is any particular height y, right? They might have given h, right? Okay, they have given h. I have written y, no issues. So this angle is, let's call this A, and we know if we join it at this corner, this is going to be B. So it is A and it is B, and the projected angle is theta. So we can directly understand that there is a relation that tan theta is equals to tan A plus tan B. Now, point to be understood here is that they have not given the angle B. What the question wants you to understand is, the question is asking that please calculate the value of tan A in terms of tan theta. Now the point is how to eliminate B. We have to eliminate B, only then we can form a function of A in terms of theta, right? So we know this is the relation there, we understand this relation. So we have to eliminate tan B. What if I can calculate tan A minus tan B? If I can calculate this value tan A minus tan B, and I already know this relation, and if I'll add these two equations, I can get rid of tan B. Then I can definitely have a relation of tan A into tan theta. Okay, fine. So my objective is to now calculate tan A minus tan B. Fine. So please understand what is the value of A and B. We must place the value of tan A and tan B. So again, the horizontal velocity ux, right? If the projectile takes t1 time to reach point A, then it will take t2 time to reach the downward portion. Okay. So this particular length, I can say, if the projectile has taken t1 time to reach point P, I can write ux t1, and the time t2, right? We had two solutions of the quadratic equation t1 and t2. So this is t1, and this portion will be covered in the t2 time. So this particular length is called ux t2. And let's place the value of tan A and tan B, and let's see. So the value of tan A minus tan B becomes, the perpendicular is y, it is ux t1 minus y over ux t2. Okay, y by ux we can take common, so it is going to, we are going to get t2 minus t1 over t1 and t2. Now our primary task is to evaluate the value of t2 minus t1. We already know the value of t2 plus t1, right? The value of t2 plus t1 is 2uy over g, from the same concept, the roots. And t1 and t2 we know is the value 2y over g. Okay, these two we know, and we want to investigate t2 minus t1. So I think we can understand, if I square this t2 minus t1 square, I can write this in the format of t2 plus t1 whole square. The t2 square t1 square will be common in both. Here I want minus 2 t1 into t2 factor. So I'll just minus with the 4 t1 t2. Okay. So this is how I can get the value of t2 minus t1. So t2 minus t1 becomes basically t2 plus t1 whole square minus 4 t1 t2. Let's play. I'm placing the values. t2 minus t1 whole square. t2 plus t1 is 2uy over g whole square minus 4 2y over g. Understood? Let's calculate further. This will become 4uy square, or 4uy square divided by g square. Then this is minus 8y over g. Great. Now I can see something inside this.
if the maximum height is h, then I can write the maximum height as uy square over 2g, isn't it? Can I make maximum height in this expression? I think I can. If I can divide it with the 2, I'll have to write 8 over here. Then this is uy square over 2g. There is 1g extra, right? So it becomes 8y over g. I think you can see the maximum height expression. Rewriting it, it becomes 8 maximum height over g minus 8y over g. So let's take 8 over g as common. This is going to be h minus h. So finally, we are getting the value of t2 minus t1 is under root of 8 over g into h minus h. First milestone achieved. Okay, you've got the value of t2 minus t1. Now the task is to write this expression 10a minus 10b. Okay, it's a quite lengthy problem, but have patience. Okay, t2 minus t1 is equals to root 8g h minus h. Then let's write the expression for 10a minus 10b, which is 10a minus 10b is y over ux t2 minus t1, and t2 minus t1, the expression is 8 over g h minus h, fine, divided over t1 into t2, and t1 into t2 is basically 2y over g. Okay, fine. I can see the y's, we can cancel out y. We can cancel out y, and again rewriting this expression, making it more understandable. Let's keep the 1 ux out. Okay, and let's take this complete quantity, the denominator, up. So this becomes 8 into h minus h. This expression remains, and I'm writing this 4 into g square. Okay, I'm writing this as g square. Then there is a g also in the denominator. Okay, if you take this quantity inside the under root, you'll have to write 4. You cancel out. This becomes ux. We are finally getting 2 h minus h. Then there is a g. Okay, this is what we are getting. I know it doesn't seem to be a good expression, but we'll try to make it. So the expression we are getting for 10a minus 10b is basically 1 over ux under root of 2 into h minus h into g. Okay, am I right? Yes. Now let's separate this expression. Let's write 2g outside and then write h minus h separately. Okay, and let's divide it with the ux. Now ux is hardly of any use to us. So what do you think in place of ux we can write? Ux is basically u cos theta. Okay, so I also have to introduce theta. So root 2g, what if I write it as u cos theta? Huh? And if I divide it with the sine theta, I must multiply it with the sine theta. And there is a reason why I am doing this, because this is the factor which I don't know what to do with. So I just want to convert this into the maximum height expression. Okay, so this becomes basically root 2g over, this is the value 10 theta. I hope you can see this. Then there is u sine theta. Okay, this particular quantity becomes, this becomes 10 theta, and this sine theta I have taken it with the u, it becomes u sine theta. Let's again, and then there is an h minus h there. Let's take it in the under root, and it becomes 2g over u sine theta whole square. Finally, it's a peace moment. Okay, so this quantity, you remember this, what is this quantity? This is uy square over 2g, guys. This is maximum height. So if it is a maximum height, it is basically under root of the maximum height, right? So the expression becomes 1 over
under root h into tan theta under root h minus h. Very nice. So this is tan A minus tan B. We are finally getting as the value is tan theta, and then let's take this maximum height expression h inside this under root. So we are getting 1 minus h over h. And there is one more important information, that is we were calculating the value of T2 minus T1 whole square, right guys? So if we'll take the under root, now we'll have to write a plus minus. I hope you all understand this. So it's a plus minus, right? The whole answer will come with a plus minus. Yes, it is going to be a plus minus. And what is the value of 10a? What is the value of 10a plus 10b? The value of 10a plus 10b is basically, we already know, tan theta. So let's add these quantities. So the 2 10a becomes, taking out the tan theta in the common, and 1 plus minus under root 1 minus h or y divided over h. Okay. Let's take this 2 in the denominator to make it more better expression. So this is our perfect answer. It's a very nice question from the perspective of an integer type. Okay. It's purely a projectile problem, and this can be asked in the IIT Advanced in the integer type question. Okay, we have got this expression, but we must also analyze this expression. Okay, what have we got? So this is our projectile. Okay, let's analyze what we have got. Suppose this is the point P and this is our maximum height. It's a point P. So this is the angle which we were actually calculating, A. Okay, and our projection angle is theta. Okay guys, fine. When we launch the projectile, this A is going to continuously decrease. Okay, we know the value of the A with the theta when the projectile is right at the top, right? So there is this, there you see the answer with the plus and a minus sign. Okay, so answer with the plus sign. So when you have the projectile in the first half, you see the angle is greater, and when you see the projectile in the second half, the A has to be lesser than tan theta. Okay, so basically this plus minus indicates in the phases of the projectile, the plus, the angle, the A will be with the positive sign in the first phase and will be negative in the second phase. Okay, so this was the question. I know it's a longer question, but it's an important result. Okay, if you can retain this result in your exam. Let's go into our third problem. Okay, it's an interesting problem. Block A starts sliding down from rest. Please understand, the block is at rest from the top of a frictionless inclined wedge. At the same time, when A starts moving, ball B is projected from the base of the wedge vertically below A. Both the blocks and the ball reach the bottom of the inclined plane. Please mark this statement. It's simultaneously, both have been launched at the same time and both reach is the angle of projection of the ball. Interesting problem. You are supposed to calculate the angle. Suppose I have launched the projectile with a speed u and the angle of projection is theta. Now we are supposed to calculate this theta. What are we given in the question is that this block attains the speed u in this direction. Obviously it will attain in this direction, and if we talk about this projectile, so it will go down like this. And as you know, for a projectile attains the same speed at the end portion, right? And it makes the same angle as that of the initial. So this angle is going to be theta, and this angle, let's call this angle as alpha. Okay, so this angle is going to be alpha.
So this is the piece of information we are given. We have to comprehend on this basis. What can we say? Okay, let's analyze this. Let's call this as A and let's call this as B. Okay, what can we say about A? So basically A has gone down, right? If you take the component of G, you guys know that the component, I have taken this angle as alpha, so the component is going to be G cos alpha and the component is this direction is going to be G sin alpha. Fine. Let's say, what is the time? We already know the speed. The speed is U. तो जैसे कि ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोलता हूँ. इस पुरानी क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक है जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे आ गया इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड होकर, राइट? और एट द सेम टाइम आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में दी है, दैट इज कि प्रोजेक्टाइल की जो फाइनल स्पीड होती है वो भी यू हो जाती है, जस्ट लाइक द प्रोजेक्शन स्पीड. और जो इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड होकर आ रहा है उसकी स्पीड भी कितनी हो जाती है? यू हो जाती है. जो भी डिफरेंस आएगा दोनों ही वेलोसिटीज के एंगल में आएगा. तो हमारे पास, हमको बेसिकली निकालना है कि प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन एंगल कितना है. हमारे पास पहले हम कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हमारे पास टाइम कितना आएगा? ओके, हमारे पास जो वेज है जिस पर ये सब कुछ हो रहा है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस इज एल एंड दिस इज अल्फा. तो ये अल्फा है, दिस डिस्टेंस इज एल. हमारे पास और क्या, अगर हम लोग टाइम नोट डाउन करें कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है गाइस, राइट? हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगाएंगे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन. तो हमारी फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है? u. इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से रिलीज किया और एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी g sin अल्फा. तो आपके पास ये t का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? u ओवर g sin अल्फा. तो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास यहां से आ जाती है. और क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास? पार्टिकल पाथ है, ये जो लेंथ है दिस इज एल, ये लेंथ एल है. तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूज कर एक एक्सप्रेशन बनाना चाहूंगा. थर्ड इक्वेशन से इज तो बच्चों प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया होगा? ये तो हमने इंफॉर्मेशन पार्टिकल यानी कि ब्लॉक के हिसाब से लिखा है. अब हम प्रोजेक्टाइल के इंफॉर्मेशन को लिखते हैं. प्रोजेक्टाइल का इंफॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? आपको पता है प्रोजेक्टाइल इस तरीके से लॉन्च हुआ है, राइट? और ये जो पॉइंट है, मैं इसको एक और बार रीड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे. आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो किस तरीके से लॉन्च हुआ है? देखो जरा, इस तरीके से लॉन्च हुआ है. तो आपके प्रोजेक्टाइल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चों और एक वर्टिकल वेलोसिटी है. ठीक है, ये एंगल हम लोगों को पता है कि जब प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन एंगल अगर थीटा है तो फाइनली वो कितना उसकी वेलोसिटी एंगल बनाती है बाद में लेटर फेज में? वो एंगल भी थीटा बनाती है. और उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? हाँ, तो हमने प्रोजेक्टाइल को बोला था पार्टिकल बी, तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ जाएगी 2u sin थीटा बाई जी. क्या ये जो टाइम प्रोजेक्टाइल ने लिया, क्या ये बिल्कुल सेम होगा उस ब्लॉक के टाइम से? बिल्कुल हाँ, ये सेम होगा. तो ये t कैपिटल T इस स्मॉल t के इक्वल कर देते हैं u बाई जी साइन अल्फा के. ये इक्वल हम लोगों ने कर दिया. तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है. आई थिंक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है बच्चों कि 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन अल्फा. ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूं. मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि साइन अल्फा जो है
वो इक्वल आ रहा है 1/2 साइन थीटा के। चलिए देखते हैं इसको आगे चल के हम कैसे यूज करेंगे। इसको हम यूज करेंगे, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल से, और क्या हमारे पास रिलेशन आ रहा है, प्रोजेक्टाइल की रेंज, प्रोजेक्टाइल के बेसिस पे ये डिस्टेंस कितना होगा। आपने ये एल माना था, ये एंगल आपने अल्फा माना था, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना आप लिख लेंगे ट्राइंगल की सिमेट्री से, दिस इज गोइंग टू बी एल कॉस अल्फा, ये एल कॉस अल्फा हो जाएगा। अब ये आप बताइए ये डिस्टेंस कैसे कवर होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड और आपने टोटल टाइम लिया टी, दिस इज गोइंग टू बी एल कॉस अल्फा। तो आपकी यूएक्स की वैल्यू आप इसमें डालें, दैट इज यू कॉस थीटा, और इसमें टाइम की वैल्यू अगर हम लोग डालें विच इज बेसिकली 2u sin थीटा ओवर जी, सो दिस कम्स आउट एज एल कॉस अल्फा। तो देखते हैं इसमें से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम लोगों को बेसिकली अल्फा को एलिमिनेट करना है, एल को एलिमिनेट करना है, और हमको फाइनल आंसर चाहिए थीटा में। तो ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास आया, क्या इसमें एल है, तो ये एक्सप्रेशन को दोबारा मैं लिख देता हूं, मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिख देता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, यानी कि बेसिकली रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को मैंने किसके बराबर लिख दिया, एल कॉस अल्फा के। चलो बहुत अच्छा, एक ये रिलेशन मेरे पास आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा। क्या वहां से मेरे पास कोई रिलेशन था, हाँ एक ये रिलेशन तो दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखो मैं इसमें यू स्क्वायर ओवर जी एल लिखूं, यू स्क्वायर ओवर जी एल इसको लिखूं, तो क्या इसको 2 साइन अल्फा लिख सकता हूं, तो यू स्क्वायर ओवर जी एल की वैल्यू 2 साइन अल्फा आ रही है, ठीक है ना। तो यू स्क्वायर ओवर जी एल, यू स्क्वायर ओवर जी एल की वैल्यू मेरे पास आ रही है कॉस अल्फा ओवर साइन 2 थीटा। यू स्क्वायर बाय जी एल की वैल्यू कॉस अल्फा बाय साइन 2 थीटा, यहां से क्या आ रही है 2 साइन अल्फा, यहां से आपके पास आ रहा है 2 साइन अल्फा। ओके, सो दिस 2 साइन अल्फा, this 2 sin alpha becomes equal to cos alpha upon sin 2 theta, cos alpha upon sin 2 theta। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं गाइस, इसको यहां लाकर 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं इधर cot alpha। ओके, एंड देयर इज अ 2 आल्सो, सो इट विल बिकम 4। ठीक है, तो मेरे पास यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा बाय 4। एक ये इंफॉर्मेशन मेरे पास यहां से आ रही है, और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी आ गई है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, क्या ये एक्सप्रेशन ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एल कॉस अल्फा, ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी एल विल बिकम कॉस अल्फा बाय साइन 2 थीटा, ठीक है करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस अल्फा बाय साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, पीछे से हम लोगों ने निकाला था यू स्क्वायर ओवर 2g साइन अल्फा इनटू एल, सो यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, दिस इज आल्सो करेक्ट। साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, एक और इंफॉर्मेशन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा। देखते हैं, हम लोगों के पास पहले साइन अल्फा का एक्सप्रेशन था ना, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इंटू 4। यहां पे साइन अल्फा की अगर मैं वैल्यू डालूं गाइस, साइन अल्फा की वैल्यू डालूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय sin alpha will become, the 2 will come in the numerator, this will become 2 sin theta। अच्छा, तो this 2 and sin theta will cancel out, तो आपके पास बचेगा बच्चों 2 cos theta is equals to cos alpha। बहुत अच्छे, तो आपके पास cos alpha is equal to 2 cos theta बचा, गुड टू गो। sin alpha हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे इंतजार की घड़ी आ गई है, खत्म हो गई है, सॉरी, sin alpha is equals to 1/2 sin theta। Okay, this is the first equation, let's call this a new equation। और हमारे पास
cos अल्फा की वैल्यू 2 cos थीटा आ गई है, cos अल्फा की वैल्यू 2 cos थीटा आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, लेट्स स्क्वायर एंड ऐड देम, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें बच्चों, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, that becomes 1 and this becomes 1 over sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 1। चलिए अब आप जानते क्या करना पड़ेगा, हमको एंगल निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बिकम, लेट्स राइट cos एज sin 1 over 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आ रहा है अपने पास, 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। नाइस, ब्यूटीफुल इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या आया, लेट्स टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, दूसरी साइड पर लेकर चलते हैं। सो वी आर फाइनली गेटिंग अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन, it's a 16 sin raised to power 4 theta, then you take this 16 on that side, so it will become 12 sin square theta, and then there is a minus 1. So this is the final equation in the sin square theta. Okay, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है, 0 is equals to 16 sin 4 theta minus 12 sin square theta, and I think उसमें minus 1 था, हाँ उसमें minus 1 है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कितना आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, वो आएगी 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 AC, सो दिस विल बिकम प्लस इंटू A इंटू C एंड डिवाइडेड बाय 2A, दैट इज 32। सो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट एज 12 over 32 प्लस माइनस, यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है, 144 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 32, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, 4 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 3/8 प्लस माइनस, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू, ठीक है, रूट ऑफ आपका जो एंगल आएगा 3/8 राइट, प्लस माइनस रूट 208 divided over 32. This is going to be your answer, right? But please ensure आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आप just calculate this quantity. इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट के अंदर यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, तो आपके पास जो माइनस वाली वैल्यू आएगी, प्लीज एलिमिनेट इट। सो दिस इज योर फाइनल एंगल। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर आप इसको ग्रेजुअली स्लोली कंसेप्चुअली एड्रेस करेंगे तो आराम से यू विल गेट दिस आंसर। ओके, इंटीजर टाइप के फॉर्मेट के हिसाब से दिस प्रॉब्लम आल्सो बिकम्स रेलेवेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इट इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, ओके, जस्ट रीड इट। देयर इज अ पॉइंट P, the coordinate of the point P is given as 80 and 60, is a point in the xy vertical plane with the gravity shown in the y direction. Okay, fine. For a given launch speed u, the projectile thrown reaches P in 4 seconds. कहता है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया तो उसने इस कोऑर्डिनेट पर पहुंचने के लिए 4 सेकंड का टाइम लिया। तो आप ये बात प्रूव कीजिए कि कोई और भी एक और प्रोजेक्टाइल कोई ना कोई होगा एटलीस्ट, या कितने होंगे पता नहीं, पर एटलीस्ट प्रूव कीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल और भी होगा जिसकी इनिशियल स्पीड बिल्कुल सेम होगी, जिसका डायरेक्शन और जिसका प्रोजेक्शन एंगल अलग होगा, और आप बताइए कि एक और प्रोजेक्टाइल होगा जो इस पॉइंट से पास करेगा, और साइड बाय साइड आप उसका टाइम पीरियड भी बताएं कि वो कितना टाइम लेगा इस पी पॉइंट पर आने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को इस क्वेश्चन से पहले हम देखते ही बता सकते हैं, यार ये जो पॉइंट है ये लिखा है 80,60, दैट इज इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 80, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 60। तो क्या मैं इस प्रोजेक्टाइल की दो स्पीड मान सकता हूं, यूएक्स और यूवाई? अभी तक तो मैं ऐसे ही करता हुआ आया हूं, राइट? तो मान लेते हैं कि कितना टाइम लिया प्रोजेक्टाइल ने। लेट अस अंडरस्टैंड कि यूएक्स
और हम लोग एक काम करते हैं, जनरल एक्स वाई के लिए सॉल्व करते हैं। उससे हमारे दो फायदे हैं कि हम लोग प्रूव भी कर पाएंगे और साइड बाय साइड बाद में वैल्यूज डाल के इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी कर लेंगे टाइम की। तो देखिए, अगर ये पॉइंट पी कोई रैंडम पॉइंट है एक्स, तो क्या यू एक्स किसी टी टाइम में ट्रेवल कर कर एक्स अचीव कर लेगा? ओके, किसी रैंडम पॉइंट के लिए प्रूव करते हैं। तो बताइए प्रोजेक्टाइल वाई कैसे अचीव करेगा? यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये दो डेटा हमारे पास आ गया। यू एक्स की वैल्यू डालें, u cos theta into t is going to be x and u sin theta t minus gt square by 2 is equals to y. This is equation 1, this is equation 2. थोड़ा सा इनको अलग तरीके से मैं अभी लिखूंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। u cos theta into t बराबर x को मैं लिख सकता हूं क्या? cos theta is equals to x by ut। ध्यान से देखिए थर्ड इक्वेशन। उसी तरीके से सिमिलरली पहले वाले फॉर्मेट को मैं क्या लिख रहा हूं? u sin थीटा इंटू टी को मैं लिख रहा हूं y प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2, और आप यहां पर sin थीटा लिखिए एंड ब्रिंग एवरीथिंग इन द डिनोमिनेटर, दैट इज y ओवर यू टी प्लस जी टी ओवर u2। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखते क्या आता है। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल टर्न इनटू 1, ठीक है। और आपके पास राइट हैंड साइड पर क्या मिल रहा है बच्चों? x ओवर यूटी का होल स्क्वायर प्लस y बाय यूटी प्लस जीटी बाय u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, सो यू विल गेट u स्क्वायर। अच्छा, मैं u को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, u को तो मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से। तो u को कॉमन लेंगे तो बच्चों हमारे पास u किधर आ जाएगा? LHS में आ जाएगा। तो लेट्स कॉल दिस एज u स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर लेकर। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर ओवर t स्क्वायर प्लस दिस बिकम्स y स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। हम लोगों ने u ऑलरेडी ले लिया कॉमन। दिस विल बिकम g स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 4 एंड देन यू विल राइट 2 इनटू दिस क्वांटिटी। तो इसमें t विल कैंसिल आउट, 2 विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा yg। तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर अब मैं टाइम को एलसीएम लूं, टाइम को एलसीएम लेते हैं, जरा देखिए क्या बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी की पावर 4 बाय 4 प्लस वाई जी टी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर भी आएगा टी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब मैं इसको रीअरेंज करके दिखाना चाहता हूं कि एक हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है उस साइड पर। वो क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जी स्क्वायर बाय 4 इंटू टी रेस टू पावर 4, देन टी स्क्वायर की क्वांटिटीज को एक तरफ लिखिए, वो बन जाएगी वाई जी माइनस यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अब आप जो हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना, वो करते हैं। इसमें 4 बाई जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम टी स्क्वायर इंटू 4 बाय जी स्क्वायर इंटू वाई जी माइनस यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। बहुत ही शानदार। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक कहें या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैथ्स में सीखा होगा, राइट। हम इसको टी स्क्वायर को एक नया वेरिएबल यू असाइन कर सकते हैं, उसकी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। यू की वैल्यू आ जाएगी तो यू की वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर की वैल्यू। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन के रूट समझें, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। ध्यान से देखिए, अगर इसके रूट t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर होते तो इनका प्रोडक्ट आता, आपको पता है, c बाय a के, राइट। आई थिंक यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, राइट। वी हैड 4 स्क्वायर बाय जी स्क्वायर भी था, राइट। हम लोगों ने यहां इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 4 स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। ओके 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 ओके, तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। दिस विल बिकम 4 एंड देयर विल कम अ जी स्क्वायर,
ठीक है ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर करेक्शन करिए थोड़ा सा, आपके पास आ रहा है 4 और नीचे आ रहा है जी स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहां से प्रूव हो रहा है कि उस पॉइंट P पर जो x, y है, ऐसे दो प्रोजेक्टाइल पॉसिबल हैं जिनकी सेम इनिशियल स्पीड होगी। उस पर अगर एक t1 टाइम लेता है तो दूसरा प्रोजेक्टाइल t2 टाइम लेगा, और उन t1 और t2 की वैल्यू कितनी आ रही है, लेट्स टेक द अंडर रूट, दिस विल बिकम 2/g एंड इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आपकी x, y की वैल्यू कितनी दी हुई थी गाइस, 80, 60, उसमें वैल्यू डालिए, और एक टाइम, एक प्रोजेक्टाइल का टाइम आपको दिया हुआ है, दैट इज 4 सेकंड, और सेकंड वाली वैल्यू को आपको निकालना है। तो ये वैल्यू 4, t2 सपोज हम लोगों को निकालनी है, दिस विल बिकम 2/10 एंड दिस बिकम्स 80 का स्क्वायर इंटू 60 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट एज 2/10, राइट, एंड इट विल बी 6400 plus 3600, this will come out as 2 into 100 divided by 10. So आपके पास 20 मिलती है वैल्यू, तो 4 t2 की वैल्यू अगर आपको 20 मिल रही है तो t2 की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कि t2 की वैल्यू आपको 5 सेकंड मिलेगी। तो इस चैप्टर प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।